Over to you, Dr. Saurabh. Thank you so much, Rahul. Good evening, everyone. I welcome you all to a new session where we are going to be in conversation with another surgeon from Sancheti Hospital. And today's topic is about robotic treatment of robotic spine treatments. So, whenever we talk about back pain or whenever we talk about spinal surgeries, there has always been a lot of fear, a lot of ignorance towards back pain, and a lot of phobia and dilemmas about will the surgery be successful, what are the what are the complications related to the spinal surgeries, and we always keep getting all these questions. So today I have with me Dr. Ajay Kothari, a senior spine surgeon from Sancheti Hospital, to address all these issues and address to all these fear factors that patients have in their mind about what are the newer advancements in spine surgeries and how newer technology is helping make the spine surgeries safer and safer every passing day. Thank you so much, Dr. Kothari, for joining us today. Pleasure. Uh, so sir, like I was saying की ज्या ज्या वेळेला आपण स्पाइन सर्जरीज किंवा कुठल्याही प्रकारचं बॅक पेन त्याची ट्रीटमेंट याचा विचार करतो, तीन गोष्टी मला नेहमी ऐकायला मिळतात पेशंटकडनं. दोज थ्री थिंग्स आर ईदर की इट्स ओके, विथ एज द पेन हॅपन्स, आय विल लिव्ह विथ दिस, आय टेक सम मेडिसिन बिकॉज it is just part of aging and I will live with this. Second thing is my relatives tell me that की स्पाइन सर्जरीनी हे कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात, सर्जरी करू नका, नाही तर तुम्ही आत्ता जे करू शकताय ते पण करू शकणार नाही. So these kind of things I always get to hear. So what is the reason behind this, and why this kind of phobia exists? Yeah, excellent question, Saurabh. And I can tell you that every patient who comes to us and for some reason he needs a treatment, the first question he asks is, Doctor, क्या मुझे paralysis होगा? क्या मैं वापस चल पाऊंगा? So these are the things even in 21st century patients, they still have in their minds. So I think आज एक बहुत auspicious day है for Pune, because our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is in Pune today whole day. And Pune's metro project, the technology, the river cleaning, the green energy, I think he has brought a lot of vibrancy to the atmosphere. Very and his motto is technology. So I think let's take ahead this technology motto, and I would like to show some of the important things where technology has really played an important role in spine surgery. So when we talk of the newer gadget that we have at Sancheti Hospital, and that is the robotic spine treatment arm, that is the O-arm navigation and neuromonitoring in spine treatment. So what is this? Ye kya hai? So when we talk of this treatment, we can see that अगर आपको कहीं जाना है तो पहले हम पूछते थे कि अगर if I want to go to X place, वो कॉर्नर के पान शॉप पे पूछा कि अरे ये मुझे गुरुवार पेट जाना है तो मैं कैसे जाऊं. फिर थोड़ा आगे जाके कोई एक शॉप है, उसको पूछा कि अरे ये एड्रेस किधर है. बट अभी गूगल मैप्स के साथ नेविगेशन आया है विच विल एग्जैक्टली टेल यू कि आपको कहाँ जाना है. सो दैट्स द सेम थिंग दैट इज अप्लाइंग टू स्पाइन दीज डेज. सो स्पाइन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है अगर आप देखें तो, that it is a group of nerves and a group of blood vessels which is a very complex area. और उसका काम भी है कि बॉडी को जो पावर है, सेंसेशन है, बॉडी का यूरिन का कंट्रोल, मोशन का कंट्रोल, ये सारी चीज वो कंट्रोल करता है. अभी पहले के जमाने में स्पाइन सर्जरी यूज्ड टू बी ओपन सर्जरी wherein many stitches used to be involved, lot of blood loss used to be involved. बट आज के एरा में ये एक कीहोल अफेयर हो गया है. रोबोटिक ट्रीटमेंट इसमें आई है, डे केयर सर्जरीज इसमें आए हैं. इसमें पेशेंट सेम डे या अगले दिन घर जाता है. पेशेंट को ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ता. ही कैन गेट बैक टू हिज वर्क इवन फास्टर. सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नंबर वन, a good infrastructure, and that includes these armamentarium things like the O-arm, the navigation, high-tech robotic systems, microscopic surgeries, which is very, very, very important. So ये high-tech technology की वजह से spine surgery has become very safe. Recovery has become very fast. That is discharge within 24 to 48 hours of the treatment. Assured results and excellent outcome. So क्या है ये O-arm और navigation? Let's see.
नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी. आई एम अ कंसल्टेंट स्पाइन स्पेशलिस्ट एट संचेती हॉस्पिटल पुणे. बहुत लोगों को ये डर होता है, पेशेंट्स को ये डर होता है कि डॉक्टर मेरा स्पाइन के ऑपरेशन के बाद मुझे पैरालिसिस होगा. पहले मैं चल पा रहा था, अभी ऑपरेशन के बाद काफी पेशेंट्स के रिलेटिव बोलते हैं कि आप बेड रिडन हो जाओगे, क्या ये सही है? मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आज हमारे पास ये इंट्राऑपरेटिव सीटी स्कैन है जिसको ओआम बोलते हैं और ये नेविगेशन है. हम ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं और ये सीटी स्कैन की इमेजेस इस नेविगेशन को जाता है, तो ये दोनों लिंक है. तो पेशेंट का जो पूरा स्पाइन का ज्योग्राफी है ये हमारे हाथ में होता है और जब हम स्पाइन की नसें फ्री करते हैं, ट्यूमर रिसेक्ट करते हैं, स्क्रूज डालते हैं या स्पाइन की जो डिफॉर्मिटीज होती है जैसे स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, इसको ठीक करते हैं. इसमें ये स्पाइन सर्जरी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. सो जो मेरे मित्रों को ये डर है कि ऑपरेशन के बाद कहीं हमको पैरालिसिस ना हो जाए, तो मैं अभी उनको बताता हूँ कि इसका चांसेस 0% के बराबर है. तो अभी ये पेशेंट लेटा हुआ है और ये हम ऑपरेशन थिएटर में है और ये ओआर्म स्कैन अंदर आता है और जिस भाग का ऑपरेशन करना है उस एरिया का कंप्लीट स्कैनिंग ये ओआर्म करता है. ये पूरी तरह से स्कैनिंग होता है. हर एंगल से स्पाइन का जो प्रॉब्लम है वो बराबर कैप्चर किया जाता है और ये स्कैनिंग 16 सेकंड में पूरी होती है. तो ऑपरेशन के पहले स्कैन किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन नेविगेशन को ट्रांसफर की जाती है और ऑपरेशन पूरा होने के बाद वापस एक स्कैन लिया जाता है कि आपका जो नसें है वो पूरी फ्री हुई है या नहीं, जो इम्प्लांट स्क्रूज हमने डाले हैं वो सही जगह पर है कि नहीं, जो प्रॉब्लम था वो पूरा निकला है कि नहीं, ये हमको इसमें से पूरा मालूम पड़ेगा. और ये सब पहले ऑपरेशन थिएटर में से बाहर निकलने के बाद एमआरआई मशीन में, सीटी मशीन में लेके जाकर होता था, बट आज ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारी चीजें की जा सकती है. ये इस ओआर्म नेविगेशन का फायदा है. सो जैसे हमने अभी देखा कि ये ओआर्म एंड नेविगेशन इज एन इंट्राऑपरेटिव स्कैनर. इसके साथ सौरभ और एक एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटी हमारे पास जो संचेती हॉस्पिटल में है, दैट इज एन इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग. सो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर क्या पैरालिसिस होगा ऑपरेशन के बाद, तो इसके चांसेस 0.01 के बराबर है, क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा होता है तब एक इलेक्ट्रोफिजिसिस्ट जो डॉक्टर है वो कॉन्स्टेंटली स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग कर रहा होता है. अगर थोड़ा भी प्रेशर उस स्पाइन के ऊपर आता है तो इमीडिएटली अलार्म ब्लिंक्स अप और डॉक्टर अलर्ट हो जाता है. तो जो चीज पहले ऑपरेशन के बाद पता चलती थी वो इंट्राऑपरेटिवली पता चलती है और डॉक्टर उस पर रेक्टिफायबल एक्शन लेकर आगे के कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकता है. सो आई थिंक आई हैव मेड माय आंसर क्लियर, सौरभ. Yeah, very well, sir. Thank you so much for making that clear. Yeah. So you have really very well explained how technology is helping the surgeons of today to make precision surgeries so that कोई भी complications of spine surgery से associated थे वो ना हो. But whenever we talk about humans, it is always the case of see it to believe it. And usilie for our audience, now they have understood the surgeon's perspective and the technology behind that. But aaj humne we have taken the liberty to call 3 of your patients जिनका आपने सर्जरी किया है एंड जिनका रिकवरी अभी 6 महीना 8 महीना आफ्टर सर्जरी द रिकवरी हैज बीन वेल, सो दैट पीपल कैन सी कि विद दिस टेक्नोलॉजी हाउ वेल पेशेंट्स हैव रिकवर्ड. सो उनके जबानी से अगर हमारी ऑडियंस तक पहुंचे कि हाउ देयर एक्सपीरियंस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी हैज बीन, so nothing more to make the point clearer of the fact that ki how safe spine surgeries are. So if you allow me, I would like to call on the first patient. Sure. So, Mrs. Sibani Ghosh, can I request you to turn on your camera and audio? Namaste.
थैंक यू सो मच मिसेस घोष, आज आपका समय हमें देने के लिए एंड अग्रीइंग टू कम एंड टॉक टू अस टुडे। इट्स माय प्लेजर, आपने लोग बुलाए मुझे। बोलिए जी। हाँ All right, Mrs. Gore, so Kothari sir ने just explained किया about technology and surgery and you have undergone the surgery. But before I talk about surgery and the rehabilitation, क्या आप मुझे थोड़ा सा information दे सकते हैं कि क्या तकलीफ आपको हो रही थी, कब से हो रही थी, why you finally came to a decision of कि यही करना चाहिए? एक्चुअली मतलब बहुत पुराने मेरा ये पेन, बैक पेन हो रहा था। तो मैं कोलकाता की हूँ, मेरा लड़का पुणे में रहते हैं। तो इधर हम डॉक्टर जाते थे ऑर्थोपेडिक्स उधर में, तो उन लोग मुझे पेन किलर दे देते थे, कम हो गया। फिर थोड़ा कोई बोला योगा करो, मैंने योगा किया, उसमें भी मेरा पेन नहीं कम हुआ था और ज्यादा बढ़ गया था। फिर ज्यादा पेन किलर लेने शुरू किया। फिर हम लोग, मैं पुणे गए, तो उधर में एक दिन गिर गए, तो उधर पुणे में। फिर उधर कल्याणी नगर में एक फिजियोथेरेपिस्ट को मैंने बोला, मुझे बहुत डर था, स्पाइन सर्जरी नहीं करेंगे। सब इधर कलकत्ता में सब कोई बोलता था करोगे तो एकदम ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे बेड में रहोगे। That's still in people's mind that if you do a spine surgery, you might not be able to walk in future, or there can be consequences. Come closer, Arindam. Can you please come a bit closer? You can come a bit closer. Yeah. I guess it's still in everyone's mind that if you do a spine, surgery, there are less chances that it can be recovered. So I guess that's where we had still in that mind till I guess you can continue. तो मैं इधर गए थे, तो उधर नीडल थेरेपी ये सब बहुत हुआ, तो भी मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ। तो मुझे सर्जरी से बहुत ही डर थे, ना जाने क्यों। ये बात सुन के फिर एक दिन इतना रात को इतना पेन हुआ, तो मैं इनको बोला कि मुझे कुछ भी तुम करो। तो वो डॉक्टर कोठारी को हम लोग भी सुने थे, मेरे भाई लोग भी बताए थे। तो फिर हम लोग उनके पास इमरजेंसी रात 2 बजे उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, तो दूसरा दिन में उनको अपॉइंटमेंट मिला, बात किया। तो उन्होंने बोला, दूसरे दिन ही मुझे बुलाया, थर्सडे को ये गए, हम लोग को फ्राइडे को हमारा वो करने, हम लोग को वो एमआरआई हुआ। तो उन्होंने देखा, तो देख के हमारा हस्बैंड भी था, मेरा बेटा भी था, उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे है। तो मुझे पूछा, आप जिंदगी भर बेड में रहना चाहते? मैं बोला नहीं। तो बोला तो फिर करने होगा ये सर्जरी। तो उनको देख के ना जाने क्यों मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाएंगे। राइट एश्योरेंस तो मुझे मिल गया। फिर तो हम लोग सब प्रिपेयर हो गया। फिर हम एडमिशन लिया मंडे को, ट्यूसडे को मेरा सर्जरी हुआ। उसके बाद देखिए, मैं बेड रिडन था, मैं उठ नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, सब ये लोग मुझे हेल्प करते थे। I guess for last for 3 to 5 months she was bedridden before she got operated, and we did a lot of research, and then as I said, it was a lot of people who said that if you do a surgery, we have heard, we have seen that people wherein they are still in bad state of thing after post surgery. So we also had that kind of thing in our mind. There is, should we go for it or shouldn't we go for it? But the way Dr. Kothari explained us the way things happen, I guess it was really the blessings and thanks to him for all the support that he's given us. Thank you so much for sharing that, and I can imagine how difficult it must be for Mrs. Ghosh to relive those 5 months where Exactly, yeah. not being able to do her day-to-day functions is a very emotionally and physically difficult time period, I must imagine. Dr. Kothari, I would like to ask you, so when you saw her for the first time, so what was your assessment, and what was your thought process, and how did you convince her? Because fear was apparent in their mind. इतना डर होने के बावजूद, how do you counsel the patients so that they agree? So I still remember Mrs. Ghosh case. It was the pandemic time, COVID times tha, and she came on a wheelchair, means she could not walk. मतलब वो हमारे ओपीडी में आए थे, तब she was on a wheelchair. मैंने बोला चल के दिखाओ, तो she took one step and she fell down again because she had no power in her legs. और ये प्रॉब्लम उनको लास्ट 4 to 5 years से था, बट शी इग्नोर्ड द प्रॉब्लम विद द फियर कि कोई सर्जरी होगा तो मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, और जो डर से वो सर्जरी नहीं करा रहे थे वही हो गया, एंड शी गॉट पैरालिसिस.
और जो पुणे में आके वो गिरे, उसका कारण था कि उनके पैरों में ताकत ही नहीं था, and that's the reason she had a fall. So when she came to us, she had absolutely no power in her legs and she could not walk even few steps. And that is the time I explained the son and her husband that, see, now is high time, we are already late, but now we have to go ahead, and we have this latest technology that is called an O-arm and navigation and neuromonitoring, and it is just recently arrived in our hospital in India per se, and we can utilize that newer technology for your surgery, and I can do the best possible job. And after the surgery, on the second day, she stood up and she walked, and it was like a miracle. And I remember still seeing her on the rounds, and after she walked, she was all in tears that, doctor, this is a rebirth for me. And even her son, and there is one relative who is a doctor in the US, he was constantly calling me that, Dr. Kothari, I want her to be operated from your hands. And even he called me twice from the US and thanked me that, doctor, she is doing great. And now, Mrs. Ghosh, I think you are in Kolkata right now. So Right. she still keeps in touch, and she just, we had a video consultation maybe a month back, and she told me that now she can walk for kilometers. She does all her household activities. She cooks. She goes to the market. She travels. She's doing everything. So I think it is a great combination of a surgeon's experience, good surgical skills, newer technology, which I think is critical. And after all, a patient's positive mindset that Mrs. Ghosh had. So I think the lesson learned here was, don't ignore your spine problems. Yes. And I guess she's a live example of what people think, still thinks that nothing is, if you do a surgery, things can go worse. I guess she's a live example. No, nothing has that sort. Technology has changed. And if you're in good hands, everything is possible. Right. So, Saurabh, if you just allow, I have her short video of how she was before the surgery and how she is after the surgery. Can I just share Yes, it? please, sir. So that will give our audience some context and perspective. I will try to pull out her video, and I still remember, how she was before the surgery and how now this is her video, yeah. So this is good. Yes. She barely could walk. She had lost all the power in her legs. She had to be held by two people on the sides. And this is Arindam on the side. Yes. It was just a day before the surgery. And this was 3 months after the surgery. Wow. And now it is 6 months she is walking without a stick and doing everything. All thanks to you, doctor, for all the help. Really. The smile on her face in that video itself tells how much elated and happy she is just to get back on her feet. So this video was still about 3 months after the surgery, and now it's been almost a year. So how are you doing now, Mrs. Ghosh? How are you going about your day-to-day activities? Are you able to do them independently? मैं घर हाउस होल्ड सब कर लेती हूँ. हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हमारा स्ट्रेस कैसे अप डाउन कर सकते हैं, सब कुछ एवरीथिंग. वो पुराना वो आ गया. थोड़ा बीच बीच में पेन होता है, ये जरूर है, लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी. खूब क्या बोलेंगे, मुझे बोलने का I guess the smile talks about everything. Yes, it does. मेरे फिजियोथेरेपिस्ट भी वो भी मुझे बहुत हेल्प किया है. मुझे डॉक्टर शरद थे और डॉक्टर कोठारी तो मेरे लिए भगवान है. उन्होंने मुझे जिंदगी दी है वापस. जो मेरा पहले था वो वापस मिल गया. मैं अभी वॉक करके आपको दिखा सकते हैं. मैं एकदम विदाउट एनी स्टिक वॉकर आई कैन वॉक. She's back to square one now. And the smile is the शॉपिंग मॉल में जाते, अभी शॉपिंग मॉल में भी चले जाते हैं इसके साथ. Right, that's amazing.
विथ व्हीलचेयर में छोड़ दिया, दिखते ही नहीं है उधर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे जिंदगी दिया, मुझे वापस दिया है। हम लोग वी आर वेरी हैप्पी, आई कांट एक्सप्रेस। I can understand. Thank you so much. Thank you so much, Ghosh, Mrs. Ghosh, for sharing that. And for our audience, it's a big morale booster कि उनको ये पता चले कि इतना भी अगर तकलीफ हो उसके बाद भी पूरा रिकवरी हो सकता है और जीवन वापस नॉर्मल तरीके से जिया जा सकता है. Thank you. I can understand it must be difficult for you to relive those days, but for our audience, you have shared the story of how your recovery has been. Thank you so much once again for that. इंटरप्ट कर रही है और एक बात बोल रहे Please, कि please. जो लोग मुझे बोला था कि आप चल नहीं पाओगे, बिस्तर में लेटे रहोगे, वो लोग को मैं दिखाया, चल के खुद दिखाया कि आप लोग आओ मुझे देखो, और किसी को कुछ करने होगा तो उधर जाओ, डॉक्टर कोठारी के पास जाओ, कलकत्ता में कुछ नहीं करो। ये बोलना नहीं चाहिए तो भी मैंने बोल दिया। सच्ची एकदम, रियली। Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Ghosh, and thank you, Arindam, for joining and sharing your story. Thank you so much. Our pleasure. Thank you very much. Thank you. So, Dr. Kothari, just based on the conversation that we just had, just fear and ignorance is something that has come up as one of the things. आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि ignoring back pain and उसको इस हद तक बढ़ने देना कि where paralysis and पैर की weakness in the legs is so bad that you cannot walk, delaying a diagnosis, delaying a surgery, how bad a effect can that have on the recovery or on overall functionality? See, a body gives you signs. What happens is, Saurabh, that the problem doesn't arise overnight. True. Body does give you signs and symptoms, but as I said, it is up to an intelligent person to understand it, to properly know about it, meet your doctor, get it diagnosed. That's very important. Because I always say that 99% of the patients of spine can be treated without surgery, 99%. But hardly 1 or 2% patients, they do need a surgery. You know my point. But what happens is, with the fear that doctor will tell a surgery, majority of the patients, they don't go to a doctor. What they'll do is they will try some alternative treatment, and they will come when they've stopped walking. And True. Then they expect miracles to happen. And that's the reason people are afraid of spine, कि वो hospital में गया और चला ही नहीं. But they don't realize that the patient has arrived to the hospital very late. That is the biggest problem. Right. Thank you so much for clearing that. So I would like to call the next patient. Karan, can I request you to turn on your video and your microphone? Hi, Karan. Thank you so much for joining us today. Hello, sir. Hi. So Karan, for our audience, can you just tell us about how, like, so just for a context to the audience, Karan had met with a very severe accident a year and a half back, and I would like to tell him about a bit about his journey right from that accident to today. So can you just tell that? Yes. So as you told that I had a horrible accident. In that accident, I got a spinal cord injury. So many doctor told us that मेरी अभी जो भी रिकवरी है या फिर जो आफ्टर ऑपरेशन जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें मैं चल नहीं सकता, या फिर जो मूवमेंट है मेरी कंप्लीट पैरालाइज थी. तो बिलो माय इंजरी में कंप्लीटली पैरालाइज था. तो बहुत सारे डॉक्टर से हमने कंसल्ट भी किया, तो सारे डॉक्टर ने बस यही बोला था कि आफ्टर सर्जरी मेरा चलना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो सारे डॉक्टर ने यही बताया. तो विद द गॉड ब्लेसिंग we had a conversation with Dr. Ajay sir, आणि वो लोग सर ने बताया कि जैसे अगर आप ये ओआर्म टेक्नोलॉजी से आप अगर करते हो, सर्जरी करवा लेते हो या फिर आपने करवा ली, तो आप नेक्स्ट टाइम मतलब आफ्टर जो ऑपरेशन जो भी आपका रहेगा वो आप सक्सेसफुली आप चल पाओगे, सब कर पाओगे. बट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हम लोग, मतलब मेरे पेरेंट्स और मैं, सब लोग घबरा ही गए थे पूरी तरह से. और जैसे कि सर ने हमें बताया हुआ था कि आप आफ्टर सर्जरी कंप्लीटली चल पाओगे या फिर आपका डेली रूटीन फॉलो कर पाओगे. तो सर ने जैसा बताया था वैसे ही, मतलब आज टिल डेट कि आज मैं चल भी पा रहा हूँ, सब कुछ अपने आप से कर पा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है मेरा. सो मेरी एक्चुअली मैंने मेरी इंजरी की जो भी जर्नी है
तो उस जर्नी पे मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, सो एवरीवन कैन गेट अ प्रॉपर पॉइंट कि एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी जो भी कंडीशन थी और आज के डेट में टिल डेट में क्या कंडीशन से गुजर रहा हूँ. सो एवरीवन कैन सी दैट वीडियो Yeah, इन दैट वीडियो. please, Karan, that would be So really if you don't helpful mind, for I will people to share my understand. video. Yes, please. Hello everyone, my name is Karan Suryanshi. I got a spinal cord injury at D10 and D11 level, and also having a vertebral fracture from T1 to S1, so that I was completely paralyzed below my injury. In this video you can see that I can't even feel my both legs and move my both legs. So my operation was done by Dr. Ajay Kothari sir. He is a spine specialist with a new technology named with O-arm. This technology developed exactly before my operation in Sancheti Hospital, Pune. So as I already told you that I don't have any sense below my waist, and also I don't have any control in my bladder or bowel movement. So many doctors told us that I am not able to walk again. If I will be walk, I have to take any support like stick or a walker. But with the God blessing, my operation was done by Dr. Ajay Kothari sir with the O-arm technology. Therefore, I'm able to walk again individually. Here I am showing you my experience and my total journey of spinal cord injury. I also have implants in my vertebra, but they are planted in such a proper way that I do not even feel or realize that they are planted over there. There are 6 poly screws in my spine vertebra, but today, as you can see the result in this video, I can walk properly and doing gym and doing my daily routine without any trouble, without any hassle. All this has happened because of O-arm technology and excellent treatment of Ajay sir. All I wanted to thank you sir for this excellent job and for my new life. And Ajay sir is having a great experience in the spinal fusion, spinal cord injuries, and all the spine related problems. So all I wanted to thank you sir. Now you can see me that I am walking without any problem, without any trouble, and also I am doing squats without any supports. I am driving a car. I am living my happy life. Thank you guys. So please sir, you are not audible to me. Yeah, thank you so much, Karan, for sharing that. Was such heartwarming to see the entire journey, Yes, and sir. I can imagine what fight you are a true fighter to get out of that. I And was a completely depressed at that moment. मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि मेरा एक लेग तो completely पैरालाइज था, और राइट लेग में आफ्टर ऑपरेशन आफ्टर सर्जरी मेरी थोड़ी बहुत जान आ गई थी, मतलब थोड़ी बहुत पावर उसमें थी, बट कंटिन्यूअसली फिजियोथेरेपी से और मेरे एक्सरसाइज से वो राइट साइड का लेग तो पॉसिबल हो गया आफ्टर सर्जरी 1 और 2 मंथ्स में वो कम्प्लीटली ठीक हो गया, बट जो लेफ्ट लेग था उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, वो कम्प्लीटली पैरालाइज था फॉर 3 मंथ्स. right. Okay. I have a question for Dr. Kothari. So when you met Karan for the first time, or you must have seen so many such patients कि जिनको बताया जाता है कि अभी आप चल नहीं पाओगे. And when those patients come to you with, I can imagine the depression and the defeated feeling that a young guy like Karan would be going through, कि अभी पूरा जिंदगी आगे है लेकिन डॉक्टर बोल रहे चल नहीं पाएंगे. So how do you go about that? What part of what assessment, what diagnosis and what investigations are required so that our audience, अगर कोई ऐसा सुन रहा है कि जिनको ये बताया गया है कि आप कभी चल नहीं पाओगे, so they know what are the steps to take to be sure that what extent of damage is there. So can you please enlighten us on that? Thanks, Saurabh. Spinal cord injury is something very close to my heart because I have done a lot of work in spinal cord injury. And I feel that spinal cord injury is such key, which is like, a devastating injury. It can really, shatter somebody's life. And in Karan's case, he was hardly 24, 25, and the only son of the family. And a middle class family wherein the
father, mother, Karan and his close relatives have come to the hospital with him on a stretcher, and they got all the scans and everything. And I was shattered. I said, oh my God, now he doesn't have any power in his legs. His spinal cord is completely cut. So now, how do we go about? And what do I tell the family? So after doing a thorough assessment of Karan, what I did was, I took the family, in a room, and I spent around half an hour with the family explaining them that, this needs a surgery. We have a newer technology, and I will not give my 100, but 200%. But this is going to be a very complex case, and I'll do the great job on table, but we need somebody's blessings is also in this case. I think this is going to be a challenge, for which the family agreed. And I couldn't sleep the night before the surgery. I still remember I couldn't sleep, and because I have to do such a critical job the next day. और अगले दिन जब हमने ये सर्जरी किया, the surgery was 1.5 hour surgery, and you won't believe, the moment he was rolled out of the operation theater, he started moving his right leg, and it was like, a battle won. And because if you start showing little movement, then gradually the power would come. And here I would like to take this opportunity that equal credit goes to a good physiotherapy, a great physical therapy unit at Sancheti Hospital, which includes Dr. Sonal Shah, her team, even Dr. Saurabh, you're a physiotherapist. I think here doing a surgery is one part, but the equal onus also has to be given to a great rehab, great physiotherapy, which was done at our hospital by Dr. Sonal and her team. And at the end of 6 months, this gentleman sent me a video that, Doc, I'm driving a car. I'm going to Goa with my friends. I said, God is great. So I think, again, somewhere you have to, give your 200%, put up all your experience in the spine surgery field. Technology, again, great role. एग्जैक्टली फ्रैक्चर फिक्सेशन में इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि एग्जैक्टली स्क्रूज कहाँ प्लेस करने हैं, स्पाइनल कॉर्ड कितना फ्री करना है, न्यूरो मॉनिटरिंग सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. So this technology, along with the great surgical team, along with the great support of the physiotherapy and God's blessings, I think Karan was absolutely, lucky to get out of this problem. And this is like a rebirth for him, a new life. उसके लिए एक नया life है ये. That's what I would like to say. Yeah, it's very, very true. And Karan, now it's been almost 11 months since that accident. How are you feeling now? Are you able to completely do everything independently? Yes, sir. So as Ajay sir already told you that I'm driving a car from last 5 months. So मैंने 6 months के बाद मेरी गाड़ी वगैरह चलाना, कार ड्राइव करना और बस 2 व्हीलर्स में कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो भी मैंने कवर कर लिया. 2 व्हीलर भी अभी चला रहा हूँ. सो एज पर द सर इंस्ट्रक्शन मैंने संचिति हॉस्पिटल में, जैसे कि आप सर ने बताया कि सोनल मैम जो है, सोनल मैम से मैंने सारी ट्रीटमेंट ली हुई थी. एंड उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग टू उनके जो भी था, तो वो हिसाब से मैंने दिन में बहुत सारी, मतलब स्ट्रगल भी उतनी की. फॉर 10 to 12 आवर पर डे मैंने एक्सरसाइज भी की. जब भी मैं पैरालाइज भी था, फिर भी मैंने जो कुछ बांध के या फिर कुछ करके उसकी पैरों के मूवमेंट करना है, ये सब करता रहा. और सर से भी कंसल्ट करता रहा. सर मैंने सर को भी आफ्टर सर्जरी मैंने एम्बुलेंस से जाके सर से कंसल्ट करके ले लिया, पर सबसे कंसल्ट करके जो भी करके लिया, तो उनके जो न्यू टेक्नोलॉजी सर बता रहे, जो वो आर्म की वजह से, वो आर्म की वजह से सर एवरीथिंग इज पॉसिबल. मुझे तो, मैं खुद से भी ये फील कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. तो आज जो भी वो आर्म की वजह से मैं चल रहा हूँ, सर की वजह से, सर के एक्सेलेंट जॉब की वजह से मैं चल रहा हूँ. और सर ने भी वैसे बता दिया कि आपको, वो खुद भी इतने टेंशन में थे कि नेक्स्ट डे इतना क्रिटिकल ऑपरेशन करवाना है. तो ऑब्वियसली वी आर आल्सो इन अ टेंशन, इन अ बिगर टेंशन. और मेरी जो फर्स्ट 3 और 4 मंथ थे, वो लाइक इट इज लाइक हेल फॉर मी. सो यू कैन इमेजिन हाउ आई, मैंने कैसे दिन निकाले हो गए 3 महीने. दिस इज ओनली नो टू मी.
और आज जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज मैं मेरे जिम कर रहा हूँ, मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, मैंने वीडियो में भी आपको शो किया कि मैं स्क्वाट्स भी लगा रहा हूँ। और पहले मेरे एक ऐसी कंडीशन थी जो KO4 रहता है, जो ऊपर तक एक सपोर्ट के लिए लेग रहता है, तो वो लगा के मुझे चलना पड़ता था। तो आज मैं इंडिपेंडेंटली, विदाउट स्टिक, विदाउट वॉकर, सब विदाउट चल रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली चल रहा हूँ। Right. Thank you so much for sharing that. And Karan, we are really inspired, and all the audience that are watching this today would be inspired with the fight that you have given and the recovery that you have achieved. कि हमने टेक्नोलॉजी की बात की, सर्जरी की, फिजियोथेरेपी की बात की, but apart from that, your undying spirit is something that we all should give credit to, because without that, nothing is possible. Absolutely. I think the most important point here is willpower. True. As True. Dr. Saurabh said, that it is a great combination of doctor's treatment and patient's willpower. Karan is an example. He was positive throughout. He was never negative. He was positive, and that is one point that all of these patients should learn. कि put your faith somewhere. कि आप आपका कहीं पे विश्वास डाल दो. Leave it in the doctor's hand and you be positive. You will definitely get a good result. That is important. Right. अगर आपको याद हो तो मैं फर्स्ट टाइम जब आपको आफ्टर ऑपरेशन में फर्स्ट टाइम आपको मिलने के लिए आया था, कंसल्ट के लिए आया था, तो वो टाइम मेरा लेग में बिल्कुल भी पावर नहीं थी। तो आपको याद रहे, एक लेग में, और उसमें क्लोनस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपने जो भी ट्रीटमेंट दी और आपने डॉक्टर सोनल शाह से आपने कंसल्ट करने के लिए बोल दिया था। तो उसके बाद कंटिन्यूअसली फॉर 2 वीक मैंने जो भी उन्होंने एक्सरसाइज बताया था और आपकी जो भी मेडिकेशन थी वो मैंने सब फॉलो कर ली। तो आफ्टर दैट मेरी क्लोनस की जो भी प्रॉब्लम थी और 99% तो मैंने क्लियर करवा ली सर। जो भी था क्लोनस की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था। इफ यू रिमेम्बर, मैं आया था आपके क्लोनस की प्रॉब्लम के लिए सर। क्या सो सर आपने जो भी जो भी किया है मेरे लिए सर, इट इज रियली रियली अमेजिंग फॉर मी। एंड सच में सर ये तो मेरी न्यू लाइफ है, क्योंकि सारे लोगों ने होप छोड़ दी। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में होप छोड़ दी थी कि मैं चल ही नहीं सकता था, ऐसे मुझे लग रहा था, क्योंकि आई वाज लाइक कंप्लीटली पैरालाइज, मुझे कुछ भी जान नहीं थी। बट सर आपने जो भी किया, आई रियली वांट टू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। was really bad experience for me, but आपके साथ जो भी मुझे ट्रीटमेंट मिली, it was a really good experience sir. Thank you so much, Karan, for sharing that and joining us today. I'm sure जिस किसी there must be people out there जो ये एक्सीडेंट के बाद, जो इसके बाद जिनको ये बोला गया होगा कि आप कभी चल नहीं सकते, you're going to be a great inspirational story to them, and they will take some positive steps towards at least giving it a 100% try कि वो पूरी तरह से recover हो सके. So thank you so much, Karan, for joining us today. Thank you sir. So before I call on the next patient, sir, I have a question for you. So what goes on through your mind जब ये spinal cord injury जैसे critical operations करने पड़ते हैं? Because like how do you see the prognosis and recovery, and is there a timeline that you have in your mind? What is your process of going through such critical surgeries? सौरभ, ऐसे बोला जाता है कि डॉक्टर शुड नॉट बी इमोशनल व्हेन ही ऑपरेट्स अ पेशेंट. डॉक्टर शुड बी अ सर्जन एंड ही शुड be very much focused. Of course I am focused, but to be very honest, I beg to differ ki doctor should not be emotional. I think when I operate such patients, I think what must be going on in his father's mind, what must be going on in his mother's mind, what they must have thought for his future, what about his marriage, what about his coming years, his career. And when you get such feeling, I think it makes you more stronger, more motivated, and it gives you that sense of binding ki it is not only one patient, you are treating hundreds of lives and tens and 20s and 30s families that are associated with this one patient. So आप एक patient ठीक नहीं कर रहे हो, आप एक पूरा परिवार जिसमें 50, 100, 200 लोग हैं उनको ठीक कर रहे हो. तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. It doesn't make me weaker, it makes me stronger. That is how it is. Right.
Thank you so much for sharing that, sir. So I would like to call the next patient, Mr. Santosh Kurtarkar. Santosh, sir, can I request you to turn on your video and audio? Good evening. Thank you so much for joining us today. Good evening. I'm Santosh Kurtarkar from Goa. Right, sir. So can you just tell the audience a bit background about before you met Dr. Kothari, what were you going through and what was the pain and discomforts that you had? I was diagnosed for spine problem. I had problem with L4, L5. This was 10 years back. First, I had consulted the doctor. So he had suggested me the operation. Then the local doctor told me that this is the last thing that you should go for, spine operation. You should try some other methods like some medicine or yoga. So I was managing this pain for yoga for almost 10 years. But before my operation, just about 4 or 5 months back, the pain has increased so much that I could barely walk. I could not stand for more than 5 minutes. But I used to go for a walk because I had a fear that if I leave walking, then I might be bedridden. But थोड़ा ही चल के जाने के बाद इतना severe pain होता था कि I was afraid whether I'm going to reach my house or not. So we were thinking, now how to manage this? Then we started painkillers also. With painkiller, initially I had some relief, but after some time that also I could not. Pain वापस वही का वही हो गया. Then we heard the name of Dr. Kothari. But as the pandemics were going on, and in Pune it was very severe. So the problem was how to contact them. But luckily, we got the contact with Sancheti Hospital, and I had a video conferencing call with Dr. Kothari. So Dr. Kothari said that, so he saw, we showed him the CT scan and all through video conferencing. Luckily, Dr. Kothari was coming to Goa next week. He was coming for a holiday, but it was really kind of Dr. Kothari to give us appointment and to agree to meet us. So we went and met Dr. Kothari, and so sir said that you will have to go for operation. Without operation, this problem will not get solved. So, and he gave us confidence that with the new technology, warm technology, now the operation is very easy and success rate is almost 100%. Well, after meeting Kothari, myself, my wife and my daughter had gone to meet him. So we developed the confidence that yes, this is the doctor who can treat me and I can be recovered. Right. Then we decided for operation. I myself, being a doctor, I was so scared about this spine surgery. But the day we met doctor, we got so much of confidence that we did not think anymore. And we immediately decided that we need to get it operated, and that too at the hands of Dr. Ajay Kothari. Right. So that much of confidence doctor gave us in the first visit itself. Right. Even second opinion also, whether we should go or not. My friends, even my local doctors had asked me after operation was decided, is it really necessary that you should go for operation? You cannot do without it? I said, why? Because that is very risky. Means it is not, the results are not that promising. So promising. we were being discouraged, but we just did not listen to anyone, and we had faith in doctor, and then we just went ahead with it. Right. Right. And how have you been after that, after the surgery? See, now I was operated in the month of June, 2nd of June. Now 9 months are over. I am perfectly okay now. I have absolutely no problem.
I drive, I do all my activities. I work in the morning, I go for a walk. I walk about 45 to 50 minutes without any problem and do all other activities. Go to market. Previously, it was not possible for me to move only. Wow. Right. So I have a question for you, Dr. Kothari. Is it like, would it be right to say that कि अगर बहुत ज़्यादा दिन पेन के साथ रह के continuing living like that, because in today itself we heard about Mrs. Ghosh, Mr. Kurtarkar, about कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता था, मैं चल भी नहीं सकता था, just waiting out of fear of the surgery for so long. Is that the reason surgery is required? अगर यही चीज वो आपको 5 साल पहले मिलते थे, would that have been possible कि he could have dealt with this problem without a surgery? Absolutely, Saurabh. So a stitch in time saves 9. ये एक बहुत अच्छा कहावत है इंग्लिश में. और इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स दे डोंट गो टू अ डॉक्टर, अ सर्जन विद द फियर कि ये ऑपरेशन बोल देगा. सो उससे अच्छा चलो हम कुछ लोकल ऑयल मसाज करते रहे या कुछ करते रहे और विल पुल ऑन. बट वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि बिकॉज ऑफ वेटिंग उनके नर्व्स अंदर वीक हो रहे हैं, उनके न्यूरॉन्स अंदर खराब हो रहे हैं, एंड बाय वेटिंग और पेन किलर खा खा कर उनका किडनी और लिवर भी खराब हो रहा है. सो जो प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही रह रहा है और खराब हो रहा है, और उसके साथ आप 4 नए बीमारियां मोल ले रहे हो, किडनी की, लिवर की, क्योंकि इसको पेन किलर के सिवा कुछ चारा ही नहीं है. और पेन किलर क्या करेगा? 6 घंटा 8 घंटा हेल्प करेगा और यू गेट एडिक्टेड टू अ पेन किलर, जिससे आपका किडनी खराब हो जाता है. और फिर डॉक्टर का याद कब आता है? जब चलना बंद हो जाता है. जैसे मिसेस घोष ने बताया, जैसे मिस्टर कुर्तकर ने बताया कि वो जाते तो थे वॉक के लिए, बट 200 मीटर जाने के बाद उनको ये रियलाइज होता था कि मैं वापस घर पहुंचूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रहा हूं. सो his daughter, Dr. Purva, she is a dentist and she was studying at DY Patil, and Purva's professor in DY Patil, uske father, he is a brigadier and he was 84. So I operated that brigadier, and that's how Purva got to know that in Sancheti Hospital ऐसा treatment होता है. And I remember in the pandemic they flew, Pune का भी airport बंद था, तो they flew from Goa to Bombay, Bombay से by road आए Pune. They got operated, they went back again the same route, and he has shown a remarkable recovery. Now 2 months back, I consulted him, and he's saying that he can walk for 6 to 7 kilometers. He goes for a walk, and he is, I think, is a land developer, and he works for 8 to 10 hours a day. He does almost everything under the sun. So again, क्या होता है कि जो लोगों में डर है कि मेरा ऑपरेशन से पैरालाइज हो जाऊंगा मैं, वो बिना ऑपरेशन के वैसे ही हो रहा है. आप समझिए बात को. सो अगेन आई रिपीट कि अगर मैं 100 पेशेंट्स देखता हूं एक हफ्ते में, तो वो 100 में से 98 to 99% पेशेंट्स हम एक्सरसाइज से ही ठीक करते हैं, उनको सर्जरी नहीं लगता है. बट वो 1 से 2% पेशेंट जिनको प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने डॉक्टर का एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ही चाहिए एंड दे शुड गेट इट ट्रीटेड. बट वो 98-99 जिनको लग रहा है कि उनका ऑपरेशन होगा, वो सफर कर रहे हैं. दैट इज द होल पॉइंट. Right. Right. So Santosh sir, so now how it has been, are you able to independently do everything like Dr. Kothari said? Now you're able to walk 6-7 kilometers. That's a phenomenal recovery. Yes, absolutely. I have absolute no problem. Actually, I have forgotten that I had a pain in my legs. Wow. This I don't remember also. Right. The pain was so severe. So I would like to add one more thing here, like doctor said. Even my local doctor had said, if at all operation is to be done, it will have to be done by a specialist, super specialist. So Right. the problem with the people here is, so who is super specialist and who can do it best? That is the problem. That's why, that is the reason why my operation was delayed, and I was afraid to consult the doctor. But now he's so happy that everywhere he suggests Dr. Ajay Kothari's name. Even if anyone just says they have any minor spine issue, that's the first thing he'll do. You should go and meet Dr. Ajay, sir. Yeah. Right. Other day, one of my
friend in Kolhapur. So he phoned me and he asked me what was your problem previously and now how you feel. I told him I feel perfectly well, better now, perfectly well. So, and Sancheti Hospital is one of the best hospitals in Asia. So you go and you meet Dr. Kothari and he will do the rest. That's amazing. And that is how this perception would change. जो फैमिली मेंबर्स रिलेटिव जिनके मन में ये डर इसलिए क्योंकि 10 साल 15 साल 20 साल पहले उनको कोई बैड एक्सपीरियंस आया है, सुना है. Now when these doctors like Dr. Kothari will operate and people will see such great recovery, तभी जाके perspective change होगा and the whole phobia around spine surgeries will change. And जितने सारे लोग with that excruciating pain they are living with it, they will finally get the courage to get it treated and start living life normally. Yes. So thank you so much. Yes, please. Even my brother's one of the friend was operated for spine surgery. This was about 20 years back. After that, he was totally paralyzed and he never raised from the bed. Right. So that was Mr. What happens is, I'll tell you here now. Initially, when we see the evolution, pehle traveling in aeroplanes, we used to see crashes and everything. But now with this GPS, with this navigation, with this technology, even pilot, they are there, but it's like all automated, and the landing, the takeoff, everything is, so smooth that hardly we ever hear of any plane crash these days. Similar thing with the cars. If you see, पहले एकदम basic 800 मारुति कार होती थी, Fiat होती थी, but आज के जमाने में the cars are equipped with airbags, the car are equipped with GPS, with navigation. So times are changing, technology is changing, and with technology, with good surgical skills, I think all these problems can be absolutely taken care of. That's how it is. Right. Thank you so much again, Santosh sir, for joining us today and sharing your story and your experience. It will surely make sure कि जो लोग ये डर के साथ जी रहे हैं कि सर्जरी से कुछ हो जाएगा, उनको एक क्लैरिटी मिली होगी कि ऐसा नहीं होने वाला, rather than living with that pain for months and years altogether. It's just a process of 3 days of hospitalization, and then within a few days time you start walking and functioning again. Thank you so much for sharing that. That will really help people who are living with pain. Thank you so much for joining us. All right. Right. So we've also had some audience questions, so I'm just going to ask those questions to you. So Mr. Deepak Nikam has asked this question. I have a gap in my femur and my knee. Knee is totally fractured. What I can do? It's not related to our topic, but do you want to take the question? I think this really needs to be seen. Right. It really doesn't seem to be anywhere related to spine. So I think we can skip the question. And Mr. Nikam, if there is something, please come down to Sancheti Hospital. We have great surgeons who are specialized in hip and knees recoveries. Please come down to the hospital so that we can get a look at you and help you. Okay, Sandeep Kainade यांचा हा प्रश्न आहे की sir, I have disc prolapse in L4, L5, S1, no pain in legs, but pain in thoracic region, thoracic back on sleeping. So he's having pain in thoracic region while sleeping, and in L4, L5, S1, a disc prolapse. So L4, L5, S1 disc prolapse will give rise to either back pain or maybe a radiation, but it cannot give a referred pain higher up in the thoracic region. So इसके लिए मेरा suggestion रहेगा कि it can be, weak back extensors which can give rise to that pain whenever he sleeps, or maybe an improper mattress that he really needs to work upon. So my suggestion to him would be that, start doing good core stability exercises, extension exercises, and find out the cause for thoracic pain, because L4, 5 or L5, S1 disc prolapse ki wajah se you would not get a thoracic pain. So I think this again needs to be evaluated. Right. So next question is from Meena Khodade. की सर खुबा खराब झाला आहे आणि शेवटच्या मणके वाकडे झालेले आहेत, तर त्यावर मणक्याची तपासणी करून घेणं योग्य असेल का? Yeah, I think this is quite a relevant question. क्या होता है कि जब hips arthritic होते हैं,
सब तब पेशेंट को वो लेग में शॉर्टनिंग डेवलप हो जाता है, एक पैर छोटा बड़ा हो जाता है, एंड देन पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग विद अ टिल्ट, वो एक टिल्ट के साथ चलने लगता है। और ऐसे सिचुएशन में स्पाइन के ऊपर काफी लोड आता है एंड द स्पाइन स्टार्ट्स रबिंग इन एन अबनॉर्मल पोजीशन, और इसकी वजह से पेशेंट स्टार्ट्स डेवलपिंग एन एडल्ट स्कोलियोसिस बिकॉज ऑफ द लिम्ब लेंथ डिस्पैरिटी। सो ऐसे पेशेंट्स को अक्सर हम सजेस्ट करते हैं कि आप हिप के डॉक्टर से मिलकर हिप का प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू रखिए। अगर एक पैर छोटा बड़ा है तो आप शूरेज यूज करिए सो दैट यू नो द लोड ऑन द स्पाइन रिड्यूसेस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए इन ऑर्डर टू मेक योर स्पाइन स्ट्रॉन्गर, एंड प्रॉपर पोस्चरल एडवाइस, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर कैल्शियम एंड अदर विटामिन ये लेना ही चाहिए। सो जरूर इस बात को देखना चाहिए कि वी हैव टू रियली गेट proper treatment. So hip and spine problems, they are many of the times interrelated. Right. So गजानन मुंडे यांची पुढची कॉमेंट आहे, मोर दॅन अ क्वेश्चन, की सर मला आपल्या 2 जानेवारीच्या वेबिनार मधल्या माहितीमुळे खूप फायदा झाला. मला 4-5 प्रॉब्लेम होते आणि 10 जानेवारी पासून मला खूप रिलीफ मिळाला आहे. सो ही वॉन्ट्स टू थँक यू. नाइस, थँक यू. पुढचा प्रश्न जो आहे की मणक्यांची गादी आणि नसा दाबल्या, आय गेस ही हॅज बीन डायग्नोस्ड विथ स्पाइनल वर्टिब्रल स्पेस रिडक्शन अँड नर्व रूट कंप्रेशन. सो त्याच्यासाठी काय करायचं हे विचारतात. या सो ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंट कंप्रेशन है. If the compression is 60% and below, then the treatment of choice would be initially rest, थोड़े medicines और exercises. ठीक है, बट अगर आपका अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इज बिटवीन 16 to 80% या 80 to 100%, तो फिर जरूर आपको आपके इंडेक्स डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर सलाह लेना जरूरी है. क्योंकि जैसे मैंने बताया स्लिप डिस्क, ये मेरे एक्सपीरियंस में मेरा अनुभव ऐसा है कि 99% ऑफ द स्लिप डिस्क कैन बी ट्रीटेड विद ओनली एक्सरसाइजेस, विटामिन एंड पोस्चरल करेक्शन. प्रॉपर आप पोस्चर आपका चेंज कर दो, आपका प्रॉब्लम चला जाएगा. आपका वर्क स्टेशन चेंज कर दो, आपका प्रॉब्लम चला जाएगा. आप कोर स्ट्रेंथनिंग योगा शुरू करो, आपका पेन चला जाएगा. सो जरूर इसको ध्यान देना चाहिए, और ये कितना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होगा. पद्मा पट्टिहाल यांचा ही कमेंट आहे अबाउट टुडे सेशन. मिरॅक्युलस, क्वाइट इंस्पायरिंग हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर पूर्वा's daddy's case. Dr. Ajay, thanks a lot for sharing with us. And that is what our aim is through these sessions, to get the patients to talk to you guys so that you can understand that no matter how bad the situation is, with proper diagnosis and a great surgeon's efforts, the recovery is possible. And thank you that we are able to spread that message across. Well, also, so that's almost the time we have. So before we wrap up, I have a question. Yes, please. Yeah, means do you believe in homeopathic or Ayurvedic? And means a lot of patients are asking these questions. Okay, why not homeopathic or why not Ayurvedic? Yeah. So Rahul, it's a great question, और मैं हिंदी में इसका आंसर दूंगा कि देखो, हर साइंस अच्छा है, कोई साइंस खराब नहीं है. एवरी साइंस का एक महत्व है और मैं उसका उचित सम्मान करता हूँ. सो मैं होम्योपैथी पे भी मानता हूँ, मैं आयुर्वेदिक में भी मानता हूँ. सो आई डोंट से दैट दे डोंट वर्क, दे डू वर्क. अभी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का क्या रोल है. सो बेसिकली कोई भी अक्यूट कंडीशन है, अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है या किसी को मेजर स्लिप डिस्क हो गया है, तो ये अक्यूट कंडीशन में फॉल होता है. और किसी को अगर घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन में फॉल होता है जो सालों से चला आ रहा है. सो मेरा जो मानना है कि होम्योपैथी दोनों में काम करती है, दोनों में उसका रोल है. बट जैसे क्रॉनिक कंडीशन है, सोरियासिस है, या आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लो, या स्पाइन का स्पॉन्डिलोसिस ले लो, या ऑस्टियोपोरोसिस ले लो, उसका ये कॉन्टेक्स्ट में अच्छा रोल है. बट इन अक्यूट सिचुएशन जहां पेशेंट को ऑलरेडी पैर की ताकत चली गई है, पेशेंट को चलने नहीं हो रहा है, यूरिन मोशन का कंट्रोल नहीं हो रहा है, आई थिंक इन सच सिचुएशंस वी हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें सर्जन अपना काम करता है और अच्छे हीलिंग के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का सहारा जरूर लेना चाहिए.
आजकल तो बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है कि ऐसे क्रॉनिक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस कंडीशंस में पेन किलर का डोज कम करने के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का हेल्प लिया जा रहा है। और बहुत से सेंटर में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट चल रही है कि एलोपैथी भी चल रही है और होम्योपैथी भी चल रही है, सो दैट द डोज ऑफ पेन किलर कम्स डाउन। तो मेरा मानना है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा साइंस है और उसका बहुत महत्व है और उसका बहुत बड़ा रोल है, और स्पाइन के ट्रीटमेंट में भी उसका बड़ा रोल है। बट yes, it has to be complemented with proper allopathic or surgical treatment. Right. I hope, Rahul, that answers your question. So we always get this question about कि whenever technology comes कि उसका surgery के cost पे क्या effect होता है. So what is the cost of a surgery using OARM? Yeah, so last time only somebody had asked and I had answered. Again I answer कि देखो ये बहुत costly technology नहीं है. मैं ये opportunity लूंगा हमारे chairman डॉक्टर पराग संचेती. I feel he is a visionary because ये टेक्नोलॉजी इंडिया में हार्डली कुछ सेंटर्स में है एंड पूना में तो पहली बार है. महाराष्ट्र में सिर्फ ये दूसरी जगह है जहां पे अवेलेबल है. तो ही गॉट दिस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, और उनका एक मोटो है कि टेक्नोलॉजी ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये मिडिल क्लास, लोअर क्लास या जिसके पास पैसे भी नहीं उसके लिए भी होना चाहिए. सो कमिंग टू द आंसर, our chairman Dr. Parag Sancheti has made it very clear that no patient will be denied treatment for want of money. और answering your question, OARM और navigation हम अगर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो इसमें पेशेंट को सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट भरना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं. Okay, so much. So you've already spoken about neurotransmitter, but तरीपन we have a question. तो क्या आप फिर से एक बार neurotransmitter टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं? सो न्यूरो मॉनिटरिंग ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रेन में यहाँ पे लीड्स लगाए जाते हैं, शोल्डर्स में, आर्म्स में, चेस्ट में, एब्डोमेन में और पैर में, और यहाँ से सेंसरी और मोटर इवो पोटेंशियल थ्रो किए जाते हैं, करंट फ्लो किया जाता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड से जब गुजरते हैं तब उसका मॉनिटरिंग एक डॉक्टर कंप्यूटर पे बैठ के कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है. इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड जीवित है. अगर थोड़ा भी स्पाइनल कॉर्ड से छेड़खानी होती है तो पहले जब रॉ ऑपरेशंस होते थे उसमें पता नहीं चलता था, बट आज के डेट में जब थोड़ा भी अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हल्का सा भी दबाव आता है तो अलार्म ब्लिंक होता है. वो डॉक्टर जो कंप्यूटर पे बैठ के कॉर्ड मॉनिटरिंग कर रहा है वो सर्जन को अलर्ट करता है और वो सर्जन वो स्टेप रीडू कर लेता है. तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने का चांस काफी कम होता है, एंड जो भी प्रॉब्लम पता चल रहा है वो इंट्रा ऑपरेटिवली पता चलता है, ना कि ऑपरेशन के बाद. सो ये एक लाइव मॉनिटरिंग चलता है स्पाइनल कॉर्ड का, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चांसेस है वो 0.1% से भी कम हो जाते हैं. Right, so much. And so along with the surgical efforts, like you've always mentioned about physiotherapy and the whole support team's effort, so we should I would like you to talk a bit about the neurology, the spine and the neurosciences department that we have at Sancheti Hospital and the kind of work that you guys are doing with it. So we have a neurosciences department which is recently been set up at Sancheti Hospital. Of course, we had a spine department, neurologist, neurosurgeon. ये सर्विसेज हमारे पास बहुत सालों से है, बट एक इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल में 3 साल पहले बना है जिसको न्यूरो साइंसेस डिपार्टमेंट बोलते हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ स्पाइन सर्जन्स, विच कंप्राइजेस ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, विच कंप्राइजेस ऑफ न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. सो कोई भी अगर स्पाइन का पेशेंट आता है तो ये एक टीम अप्रोच है. डॉक्टर पराग की एक सोच है कि स्पाइन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसमें जैसे आपने देखा कि आपको सिर्फ बॉडी को ट्रीट नहीं करना है, आपको पेशेंट के मन को ट्रीट करना है, पेशेंट के फैमिली को ट्रीट करना है. सो इट इज अ टीम अप्रोच. सो जब एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट सब एक साथ मिलकर पेशेंट को ट्रीट करते हैं तब और अच्छी सेवा दी जा सकती है और अच्छा आउटकम मिल सकता है. और इस हेतु से state-of-art neurosciences department has been set up at Sancheti Hospital. It is run 24/7
एवरी डे, एवरी टाइम ऑफ द डे कोई ना कोई डॉक्टर जो न्यूरो साइंसेस डिपार्टमेंट का वहां रहेगा, और हर ब्रेन रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड ट्रीटमेंट जो अमेरिका में अवेलेबल है वो पूना में संचेती हॉस्पिटल में अवेलेबल है. सो आई एम क्वाइट ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यूरो साइंसेस टीम. एंड अगेन विजन ऑफ डॉक्टर पराग संचेती की ये डिपार्टमेंट, ये टीम सेटअप करना, एंड इट इज गिविंग मिराकुलस रिजल्ट. सो जो मैंने ये पेशेंट्स आपको दिखाए हैं, ये मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम काम कर रही है. संचेती हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा है. सो नो वन पर्सन कैन गिव अ चेंज, इट इज अ टीम, एंड दैट्स व्हाट makes a difference. Right. Thank you so much for sharing that. So, and on that note, that's pretty much the time we have today. But before we wrap up, in today's episode, हम बार-बार ignorance and fear ये दो चीज के बारे में बात किए. So, just as a takeaway, आप क्या बताना चाहेंगे to our audience कि about ignoring their pains and their ailments, their problems, and about the fear that people have about spinal treatments, just as a takeaway from today's session. So हमने ऑलरेडी ये बात किया है कि इग्नोरेंस एंड फियर ये 21st सेंचुरी में एक्सेप्टेड नहीं है. यू हैव अ गुड राइट टू लिव अ एक्सीलेंट लाइफ, अ हेल्दी लाइफ. और जब हम ये बोलते हैं इक्वल ओनर्स इज ऑन द पेशेंट, सो आप ये मत समझिए कि कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको ऑपरेशन ही बोला जाएगा. ये गलतफहमी आपके दिमाग से निकालिए. जैसे मैंने तीसरी बार बता रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे कैन बी ट्रीटेड बाय ओनली फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, पोस्चरल करेक्शन एंड विटामिन्स. उनको सर्जरी की जरूरत नहीं लगती है. तो अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेते हो तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं. बट आप अर्ली स्टेजेस में इग्नोर करते हो फियर के कारण, और आपका प्रॉब्लम बड़ा होता जाता है. और जब आप एंड स्टेज में डॉक्टर से मिलते हो तब केस हाथ से छूट चुका होता है. एंड देन विलिंगली और अनविलिंगली सर्जन हैज टू रेकमेंड कि यू नीड अ सर्जरी बिकॉज आपका चलना बंद हो गया है. सो द पॉइंट हमको यहाँ आपको एक मैसेज देना है कि आपके जो इंडेक्स डॉक्टर है उनसे मिलिए, उनका सलाह लीजिए, और जैसे वो बोलते हैं वैसे फॉलो करिए. यू विल लीड अ मच बेटर लाइफ. और डोंट फियर कि ये मुझे ऑपरेशन बताएंगे. नहीं, 99% पेशेंट्स को जरूरत नहीं होता है. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. That's the most important point. Right. And Saurabh, I would like to take this opportunity to thank Dr. Parag Sancheti, our chairman, for bringing this technology at Sancheti Hospital, being a visionary and helping us, not only, patients who are elite class, but even the middle class, lower class people are availing this facility to the maximum. So thank you, Dr. Parag, for, giving us such an important tool and making changes in lives of spine patients. Also, I would like to thank our Executive Director Manisha Sangvi, Mrs. Rupal Sancheti, and the complete support team, including you, Saurabh, Mr. Rahul Chobe, Ajay Kashid, Harsh Thind, and the complete support team for inviting me and making this webinar possible. So really appreciate your efforts and thank you so much. Thank you so much once again. It was a very, very knowledgeable and enlightening conversation with you, Dr. Kothari, today. And along with that, the patient stories that we have heard will go on to inspire many more patients to take some firm actions on their problems and their pains that they are going through. And with these stories, I hope that the audience that are watching this today, अगर आप इसमें से कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हो, please don't continue living like that. With a proper treatment, you can get back your normal life and you can get back to living pain-free. Thank you so much for joining us today.